हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सादिया इफ्रा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ओके, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड लाइफ्स बिगिनिंग्स। हैव यू एवर वंडर हाउ अ सिंगल सेल्स grow into a complex human beings? That fascinating journey from a fertilized egg to a fully formed baby is what embryology helps us understand. क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल सेल कैसे एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में बदल जाता है? इसी फैसिनेटिंग जर्नी को स्टडी करने के लिए एम्ब्रियोलॉजी का साइंस होता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे एम्ब्रियोलॉजी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टेजेस कैसे होते हैं। ओके, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? Embryology is a branch of biology that studies the formation, growth, and development of an embryo. It focuses on the earliest stage of life, from the fertilization of an egg, cell, ovum to the development of the tissues, organs, and systems in a growing organism. In a simple terms, embryology is the science of a life before birth. एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट को स्टडी करता है। सिंपल वर्ड्स में जन्म से पहले के लाइफ का साइंस। ये साइंस हमें हेल्प करता है समझने में कि फर्टिलाइज्ड एग कैसे डिवाइड और ग्रो करता है, ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम कैसे डेवलप होते हैं और कैसे कुछ बेबीज में कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स हो सकती है। Why is embryology important? Embryology is not just about understanding how babies develop, it provides crucial insight into fertility and reproduction, helping scientists and doctors treat infertility through techniques like IVF, in vitro fertilization, birth defects. By studying how organs and tissues form, embryologists can understand why some babies are born with congenital abnormalities, how to prevent them. Evolutionary biology. Comparing embryos of different species helps scientists trace how organisms evolved over time. Medical education. For doctors and healthcare professionals, embryology builds the foundation for understanding anatomy and human development. एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ बेबी डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, डॉक्टर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बर्थ डिफेक्ट कैसे प्रिवेंट कर सकती है, ये समझने में हेल्प करते हैं। इवोल्यूशन, डिफरेंट स्पीसीज के एम्ब्रियोज कंपेयर करके इवोल्यूशन को समझना। मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बॉडी और ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करते हैं। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नंबर 1, fertilization. When the sperm and egg unite to form a zygote, the very first cell of a new organism. Number 2, cleavage. The zygote divides rapidly into multiple smaller cells, forming a structure called a morula. Number 3, blastocyst formation. The morula develops a hollow cavity and becomes a blastocyst, which implants into the mother's uterus. Gastrulation. Layers of cells organized into 3 germ layers, ectoderm, mesoderm, and endoderm, which gives rise to all organs and tissues. Organogenesis. The major organs begin to form: heart, brain, limbs, etc. Number 6, fetal stage. The embryo becomes a fetus. Growth and refinement of structures continue until birth. Each of these stages represent a critical milestones in life's earliest journey. फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं। क्लीवेज, जाइगोट डिवाइड होके स्मॉल सेल्स में बनता है, दैट इज कॉल्ड मोरूला। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, मोरूला में हॉलो कैविटी बनती है और फिर यूट्रस में इम्प्लांट होता है। गैस्ट्रुलेशन,
सेल्स 3 लेयर में डिवाइड होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, जो ऑर्गेन्स और टिश्यू बनाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, हार्ट, ब्रेन्स, लिम्स डेवलप होते हैं। फीटल स्टेजेस, ग्रोथ और रिफाइनमेंट कंटिन्यू होती है जब तक बर्थ ना हो जाए। हर स्टेज में लाइफ का एक क्रिटिकल माइलस्टोन होता है। Embryology in modern medicine. Today, embryology play a central role in assisted reproductive technologies art such as IVF in vitro fertilization, ICSI intracytoplasmic sperm injection, cryopreservation of embryos and gametes, pre-implantation genetic testings. मॉडर्न मेडिसिन में एम्ब्रियोलॉजी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आईवीएफ एंड आईसीएसआई में एम्ब्रियोज हैंडल करना, क्रायो प्रिजर्वेशन में एग्स और एम्ब्रियोज को प्रिजर्व करते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग में जेनेटिक डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। Embryologists work behind the scene in fertility labs, ensuring that every step, from handling sperm and eggs to selecting healthy embryos, is done with precision and care. एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में प्रिसीजन के साथ काम करते हैं ताकि हेल्दी एम्ब्रियोज सेलेक्ट हो और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो। Fascinating facts about embryology. The human heart starts beating around 22 days after fertilization. Every embryo begins as gender neutral. The reproductive system develops later. Many structures we have as embryos, like tail or gill-like arches, disappear before birth, showing our evolutionary connection to other animals. ह्यूमन हार्ट सिर्फ 22 दिन में बीट करना स्टार्ट करता है। एम्ब्रियोज इनिशियली जेंडर न्यूट्रल होते हैं। एम्ब्रियोज में टेल और गिल जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जो बर्थ से पहले डिसअपियर हो जाती है। द फ्यूचर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। विथ रैपिड एडवांसेस इन स्टेम सेल रिसर्च, genetics, artificial womb technology, embryology is stepping into a new era. Scientists are exploring how to repair damaged tissue, prevent genetic disease, and understand developmental disorders better than ever before. Final thoughts. Embryology reminds us that life begins with a single cell, yet that tiny cell holds the potential to become something as complex and beautiful as a human being. Understanding this science not only deepens our respect for life but also empowers medical progress, fertility solution, and ethical discussion about the future of human reproduction. लाइफ का जर्नी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन में बदल जाता है। एम्ब्रियोलॉजी हमें रिस्पेक्ट सिखाता है लाइफ के लिए और हेल्प करता है मेडिकल प्रोग्रेस में। What are your thoughts on this fascinating field of science? Would you like to explore embryology as a career or research area? Share your views below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। See you in the next video. Thank you.